स्क्रीन हाँ निलेश, ये आप जो क्या? सर्वर कर रहे हैं ये पुराना वाला तो नहीं है ना? वो तो चल नहीं नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं, इज न्यू वन। इसके डिटेल्स नहीं है, मेरे को प्लीज शेयर कर सकते हैं क्या? आपको मनिका मैम ने किया नहीं है कि शेयर? मैंने तो मुझे बोला था किया है करके। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं तो देख रहा हूँ, वहाँ तो नहीं आया है कुछ। नहीं, पर्सनल ग्रुप पे सर किया होगा। जिन्होंने मैसेज किया है ना मनिका मैम को, उन्हीं को किया है, अथर्व को भी नहीं किया है उन्होंने मैसेज। अच्छा मैंने तो ठीक बताया था ठीक सबको करना है। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना? मे बी शील रिस्पॉन्ड। ठीक है। हेलो यस। सर, हम जब कॉन्फ़िगरेशन पूरा कॉपी करते हैं जो 7500 से किया है हमने, हम्म। तब जो आपने बनाया है वो पूरा का पूरा, मतलब वो बीपी हो गया, फिर स्टोरेज नहीं नहीं, वो लोकेशन हो गया मास्टर डेटा सब। है, दैट यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड। वो तो मास्टर डेटा है। ओके ओके। क्योंकि मैं जब मतलब पीओ निकाल रहा था ना, तब मेरे को वेंडर हम्म। नहीं मालूम था, सॉरी सप्लायर नहीं मालूम था, इसलिए मैंने पूछा। वो तो हमें ही ये बनाना पड़ेगा ना? नहीं? यस यस यस, आई मीन नो, ओके जो सप्लायर है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज वन कंपनी कोड ओनली 0001. Okay, so 17, sorry, 1321 that we can use. 1321। ओके ओके। Yeah, let me. ये सर्वर में ओनली एक इशू है कि ये कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। तो बट या अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ इशू नहीं है बाकी तो। हेलो। यस। 1312 ना सर? या मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। 132121 1321। ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट वही है। बट लेट मी चेक अगेन। दैट्स या 1321. See this one. Okay, ZEW underscore sorry dash we when one. ओके। ओके, बाकी के लोग शुभम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? अभिषेक वगैरह। सर नहीं मालूम, मुझे भी मिलते तो है रोज, बोलता हूँ मैं। हम्म जो मैं अभी अथर्व तो मेरे साथ ही आता है, उसको भी हम्म। बोलता, अभी मैंने मुझे मिला था थोड़ी देर पहले, उसको भी बोला, पर मालूम नहीं सर क्यों नहीं ज्वाइन करता। ओके। ओके, नो इशू। स्लैश एन अभी स्लैश। वही सर्वर यूज करो ना नीलेश सर, आपने जो दिया है वो। यस यस यस, ओनली अभी थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, बट मैं बताता हूँ उनको, तब तक आप वही सर्वर यूज कीजिए। ओ, टुट, टुट, टुट।
7500. Okay, so last time what we have discussed, yeah, और एक बात जो मैंने अभी जस्ट बोला अबाउट वीकेंड, सो आपका जस्ट मुझे बता दीजिए, ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम होगा, राइट, विल बी लाइक फ्लेक्सिबल, विल डू फ्लेक्सिबल, और वीकडेज के लिए आई होप, सॉरी, ऑल डेज यू आर रेडी, राइट, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं फिर। ओके फ्रॉम मी, बाकी लोग बता दीजिए। मतलब वीकेंड को भी सेशन रहने वाला है सर? या मैं सोच रहा हूँ फ्लेक्सिबल यही अगर सब वीकेंड जैसे या फिर नहीं नहीं, सभी? ऑल वीकेंड्स, ऑल वीकेंड विल स्टार्ट। ठीक है सर, कोई कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, सो विल चेक कि कैसा क्या रहता है एंड देन विल डू इट। ओके, ओके now last time what we have discussed about HU. Right now we will also speed up little bit. Okay, so last time हमने देखा था कि वो HU कैसे दिखता है, right? High level HU, low level HU, right? All those value. Okay, ये हमने देखा था, right? So sometime in our warehouse ऐसे भी लोकेशन होते हैं जहाँ पे they want to store only HU, right? And then there will be some location where they want to store only loose product. There is one photo. Okay, let's say ये वाले, right? यहाँ पे only HU जो है वही हमें रखने, right? And then there is different area where they want to store only loose product, right? जहाँ पे HU allowed नहीं है, right? So with configuration we can manage. Okay, means जहाँ पे only HU ही allowed होगा, loose product system will not allow to store. Okay, so for that what we have to do, we'll create new storage type. Okay, so it's master data, right? Define storage type. Okay, new entry 7500. So for HU we'll go with HU10, right? Then our standard configuration, right? So we'll go with 4 daily stock identification, final put away because, and then ability group 002 and mandatory tick. Okay, now if you check over here HU requirement, okay, so ये blank है. If you check, so there are total 3 entry. Okay, allowed but not required, HU required, HU not allowed. So blank means we can go with both the material, both type of material, with HU, without HU. Okay, allowed bhi hai but not required. But now we are going to create storage type in which only HU is allowed. Okay, so I will maintain this X and save it. Okay, then I will create one more location. It is for loose product LS10, and now instead of X I will maintain Y. Okay, and simply save it. Clear? ये दो सेटिंग X और Y ओनली मैंने यही चेंज किया है. HU में ओनली एक HU इज मैंडेटरी और HU रिक्वायर्ड है, right? And then loose product में LS10 में I have maintained Y in which HU is not required or not allowed. Okay, I will create one bin for both. So we'll go with same HU10, same bin number LS10 and LS10. Okay,
Now we'll create one delivery. So first we'll see the simple scenario. ओके, जहाँ पे एक एचयू है और एक विदाउट एचयू है. So 2 and 2. Why it's too slow? ओके, सो मैं इसको यहाँ पे पैक करता हूँ. Only one issue is there. Okay, and another one is loose product. Okay. Right, if you try to create task, see one loose product and one HU, right? So I will go with the default value, but in your case, you need to go with strategy. Okay, and then कैसे वो आपका, like that is an assignment, right? You can use indicator, right? Or you can go with WPT also. You can determine different WPT. Okay. So first of all, I will go with simple scenario where HU will go in HU manage bean, and then loose product will go to the loose product area LS10 like this. Okay. Then I will confirm. ये तो simple flow हो गया, right? I will confirm. And same time here. See loose product क्योंकि वो लूज ही था and HU. But what if अगर हम जो बॉक्स है जो HU है वो लूज प्रोडक्ट में हम फोर्सफुली और फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर उसको फोर्सफुली पुट अवे करना चाहता है और एंड देन सेम जो लूज प्रोडक्ट वाला जो HU है, सॉरी प्रोडक्ट है, वो HU मैनेज में जान मतलब कोई रख रहा है forcefully, right? Then what will happen? So again we'll create same delivery, means with same example. One loose product and one HU. Okay. Now what I will do, जो लूज प्रोडक्ट है, राइट, इसको मैं फोर्सफुली HU वेयरहाउस HU स्टोरेज टाइप में, I will try to create task for HU manage storage type. Okay, in here in HU10, right, if you remember only HU is allowed, right? I will check what system will do. That is loose product. So yes, we are able to create task, right? Now we'll try to confirm this task, right? Again, remember in this HU only HU is required, HU is allowed. Okay. When I try to confirm,
I'm getting some error, right? It says enter destination HU, right? If you select OK and then if you go here, so सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन HU ढूंढ रहा है. मतलब सिस्टम क्या सोच रहा है कि ओके, जब हम यहाँ पे गए इस एरिया में, राइट, ये HU एरिया है और यहाँ पे ऑलरेडी HU है, राइट, बिकॉज ये HU मैनेज एरिया है. सो प्लीज लेट मी नो कि आप कौन से HU में वो मटेरियल रखने वाले हो, राइट. और वही सिस्टम यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यस प्लीज एंटर डेस्टिनेशन HU. क्लियर? समझ में आने लगे. तो मतलब इसी सर वजह से उसने टास्क बनाने दिया, राइट? अदरवाइज वो टास्क पे यस रोकता है. यस, क्योंकि वो Okay. सोच रहा है कि मे बी आप किसी बॉक्स में रखोगे, जो हम घर में नॉर्मली हमारे पास ऐसे कुछ चीजें जो हम रिफिलिंग करते हैं, राइट. अंडरस्टूड. आटा फॉर एग्जांपल, राइट, हमारा वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक ही रहता है डब्बा, बट हम उसमें रिफिलिंग करते रहते हैं. वो एक टाइप का HU हो गया फॉर एग्जांपल, और वो आटा मतलब लूज प्रोडक्ट. क्लियर एवरीवन? सर मतलब हमने एक लूज पार्ट के लिए और एक हैंडलिंग यूनिट, जैसे दो स्टोरेज लोकेशन बनाए, और उसमें हम्म. हमने लूज पार्ट हमने स्टोरेज करने के लिए, मतलब ये सेकंड जो सिनारियो बताया ना आपने, वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा. पहला सो जो बताया फर्स्ट, था वो सिंपल वाला. वो सिंपल, दैट इज हैप्पी फ्लो इज डन, राइट. यस, अभी मतलब लूज में उसमें लूज रख HU, रहे. और यस, बट अगर हाँ अपोजिट आप करोगे, हाँ हाँ राइट, फॉर एग्जांपल जो मैंने आटा का एग्जांपल बताया, राइट, अभी आप आटा हाँ लेके आ रहे हो, राइट, हाँ पीसा हुआ, जब आप हाँ हाँ वो बैग में लेके आओगे तो आप घर में किधर तो रखोगे, राइट, उसको किसी डब्बे में रखोगे, हाँ राइट. फॉर एग्जांपल आप उसको थोड़ा सा रिप्लेस करो वेयर हाउस के लैंग्वेज में, राइट. आपने हाँ. आपके पास 10 प्रोडक्ट है अलग अलग, छोटे छोटे बॉक्सेस लूज है, पार्ट मतलब. और ये HU मैनेज है, तो आपको किसी तो बॉक्स में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हाँ तो हाँ हाँ. पैलेट मतलब ऐसा आप फ्री रख ही नहीं सकते, राइट, अलाउड ही नहीं है. यस यस यस. तो सिस्टम क्या बोल रहा है, ओके बिकॉज ये HU मैनेज एरिया है, तो कौन से HU में आप रख रहे हो, यहाँ पे या इस बॉक्स में. ओके ओके, मतलब वो अलाउड कर रहा है, पर डेस्टिनेशन अपने को चूज करना पड़ेगा उसका. एंटर करना पड़ेगा, यस, HU नंबर यस आपको यस. एंटर करना पड़ेगा, देन ओनली वो ओके. अलाउ करेगा. मतलब वो जो जैसे ये लूज प्रोडक्ट वाला एरिया है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हाँ. ये रखे हुए हैं, तो ये ऐसा अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि वो पुराना वाला जो, ओके. फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, राइट, ये दोनों हम फोटो ले सकते हैं, ये और ये, राइट. तो इसमें तो हाँ हाँ. HU ही चाहिए, राइट, क्योंकि स्पेस ही नहीं है रखने के लिए. यस यस. ओके, क्लियर? समझ गया. क्लियर क्लियर. ओके, तो वो अलाउ भी नहीं करेगा, राइट. लेट इट बी. नाउ जो HU वाला जो है, राइट, जो हमने पहले HU में रखा था, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, लूज प्रोडक्ट में रखता हूँ, LS10 में. ओके, और इसका देखता हूँ सिस्टम क्या करती है. सो यस, अगेन वी आर एबल टू क्रिएट टास्क, राइट. कंफर्मेशन में जाता हूँ, सो यू कैन सी HU वेयरहाउस टास्क बना हुआ है, राइट. यहाँ पे देखिए HU नंबर है, राइट. जब मैं कंफर्म करता हूँ तो सिस्टम ने कंफर्म कर दिया, ठीक है. सेकेंड, अगर आप डेस्टिनेशन HU देखोगे तो वहाँ पे ब्लैंक है. जस्ट बिफोर कंफर्मेशन वहाँ पे ये नंबर था बराबर, अब ये ब्लैंक हुआ है, राइट. सो हाउ इट लुक लाइक इन मॉनिटर, LS10, राइट. मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए LS10 और एक लाइन आ गई, बट HU नंबर नहीं है. तो उसने इमेजिन क्या किया कि यहाँ पे, बिकॉज ये लूज प्रोडक्ट है ओनली, यहाँ पे लूज प्रोडक्ट ही रखना है कंपलसरी. तो जब आप यहाँ पे आए बॉक्स के साथ, और जब आप रखते हुए आपने वो लूज प्रोडक्ट रखा है. तो इसका सिंपल एग्जांपल है, आपने देखा होगा डीमार्ट रिलायंस में जब वो रिफिलिंग करते हैं, राइट, जो उनके वर्कर है, राइट, वो बॉक्स में लेके आते हैं मटेरियल और रखते हुए उसको लूज प्रोडक्ट में रखते हैं, राइट. हाँ हाँ. तो यस सिस्टम यस. क्या इमेजिन कर रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट HU फॉर पुट अवे, बट या मूवमेंट करते हुए आपने यूज किया, बट आप जब रख रहे हो दैट इज एन लूज प्रोडक्ट, तो वो सिंपली HU को डिलीट कर देगा. क्लियर?
इसमें अगर मल्टीलेयर एचयू होंगे तो सारे के सारे डिलीट कर देगा, राइट? यस वो इमेजिन करेगा डिकंसोलिडेट होकर आपने रख दिया और जितने भी थे सब हटा देगा। यस, मतलब ओके। उसके लिए तो थोड़ा सा प्रोसेस, ये तो नॉर्मली ऐसा तो होता नहीं है, राइट? अगर उलूस प्रोडक्ट से ही आएगा, राइट? बिकॉज देन इज नॉट मेक एनी सेंस टू क्रिएट टू क्रिएट एच यू एन दिस थिंग। मतलब मैंने तो लाइक लूज प्रोडक्ट जो है वो मतलब फिर है वो ऐसे वाले प्रोडक्ट है मोस्टली, ड्रम वगैरह। ये मैंने सोचा था ना, मैं टीएम स्टैंड पॉइंट से सोच रहा था, क्योंकि उसमें भी जब ट्रक प्लानिंग वगैरह होती है तो पहले वो एचयू में आता है और फिर उसको डिकंसोलिडेट कर देते हैं। तो ये उस तरह का ही सिनेरियो है, राइट? कि क्योंकि वहाँ यस पे यस नेट बिल्डिंग होगी और सब कुछ होगा, फिर वो आके जब यहाँ पे बैठेगा तो डिकंसोलिडेट हो जाएगा और वो एचयू जो है वो डिलीट हो जाएंगे। यप। ओके। क्लियर एवरीवन? यस सर। सचिन? हेलो सचिन, कैन यू हियर मी? हाँ, यस गॉट इट। ओके, नाउ सो ये लूज प्रोडक्ट का तो यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? नाउ we'll deep dive more into the HU manage area. So, in fact, in some of the warehouse, okay, so हमने डिस्कस किया था सर एक क्वेश्चन HU। था, यस। वो जो मतलब एचयू इज एक्ट एज ए एक स्टोरेज टाइप हो गया, तो कौन से बिन में वो एचयू को रखा है, वो कहाँ से क्या होता है स्टार्टिंग में हम? कौन से बीन में रखा है? हाँ मतलब पहले तो प्रीरिक्विजिट पार्ट्स वहाँ पे फिल होगा, वो इस एचयू में जाएगा जो एचयू ब्लैंक है, लेकिन उस एचयू का पहले हमें वहाँ पे पोजीशन कहाँ पे हम सेट करते कि ये एचयू इस बिन में है, उसका असाइनमेंट कहाँ पे करते हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट लूज प्रोडक्ट जो HU में जा रहा है वो वाला? हाँ 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 हाँ। नहीं, तो वो ऑलरेडी हमें देखना पड़ेगा कि कौन से HU है अवेलेबल उस तो पर्टिकुलर ओके स्टोरेज टाइप में, राइट? ओके लेट्स से यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 HU है, तो मतलब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जो फॉर एग्जांपल ये वाला जो एच है हमारे केस में, तो ओके इसे में अलाउ करेगा, राइट? ओके। इफ यू एंटर डिफरेंट एच तो वो फिर एरर देगा कि ये एच स्टोरेज बिन में है ही नहीं, हम्म। वो अलग बिन में है। ओके, तो ये चीज एक्ट एज स्टोरेज बिन, मतलब मेरा क्वेश्चन था। मतलब वो लिंक है, यस, ये लिंक है बिकॉज एवरी एच नंबर इज यूनिक, राइट? दैट वी हैव चेक्ड। ओके विल नॉट हैव अ सिनेरियो दैट वन नंबर इज इन डिफरेंट लोकेशन। ओके ठीक। नाउ इफ यू रिमेंबर वी हैव आल्सो डिस्कस HU टाइप, राइट? तो लाइक बबल शीट, थर्माकोल। नहीं, दैट इज एन पैकेजिंग मटेरियल। ओके, पैकेजिंग मटेरियल। पहले यस, पैलेट टाइप हो गए, राइट? यूरो पैलेट, इंडस्ट्रियल पैलेट, राइट? तो उसकी कैपेसिटी या अलग अलग होती है, राइट? So, so in storage type, right, we can say, okay, in this storage type, I only want to store Euro pallet. Okay. In this storage type, I want to store Euro pallet 2 meter. In this 3 meter, like this. So we can also like deep dive and then we can maintain specific HU type कि यही allow होना चाहिए, right? So for that, if you go back to the configuration, so here you can see HU type check stick is there. Tick this. Oh, sorry, we are in LS10. So I will go to the HU10. I will tick this and I will save it. Okay, HU type check. Now again I will create one delivery. Now मैं क्या करता हूँ? I will use box and pallet both.
ओके, मैं अलग अलग इसमें दोनों को पैक करता हूँ। Okay, now then I will try to create the task. Good receipt, then task. Okay, अभी दोनों HU मैनेज है, बट एक पैलेट है और एक बॉक्स है. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, try to the put away. This is box, right? Try to create the warehouse task. See, is giving me error. Or is this palette? Okay, first one is palette. Is giving me the error that is not permitted, right? 75 because हमने HU टाइप चेक किया है, टिक किया है. मतलब हमने सिस्टम को ये बोला है कि प्लीज वाइल डूइंग पुट अवे प्लीज चेक HU टाइप चेक. मतलब कौन से स्पेसिफिक HU टाइप मुझे रखने हैं वो चेक कीजिए और वही अलाउ कीजिए जो मेंटेन है. मतलब once you tick this, there is another table in which we need to maintain ki which HU type is allowed in this particular storage type. Okay, again when you tick this, okay, we need to maintain another table in which we maintain which specific HU type is allowed for this storage type. Okay, so वो कहाँ पे है? If you go back to cross process setting, okay, handling unit. This is, so here you can see define HU type for each storage type. Right now I will directly go with new entry. So 7500 HU10 and then 75 PL. Okay, and save it. Okay, now if I try again, see, अभी task create हो रहा है. Okay, this is for palette. If I check for box, क्या होगा? फिर से error देगा. Yes, will give the error because हमने एक ही maintain किया है, which is palette. Once you maintain 75 CB, then it will also work. Clear? मतलब सर हमने जो मेंटेन किया है HU का टाइप वो सिस्टम चेक करेगा, अगर वो अलाउड Yes. होगा तभी अपना हमारा डिलीवरी कंप्लीट होगा. Yes. और ये कहाँ पे मेंटेन करते हैं हम? HU HU टाइप. क्रॉस प्रोसेस सेटिंग में अभी नो नो, जाता है ना. मास्टर डेटा में. वो फ्रंट एंड में जाके चेक करेगा, राइट? उसको क्या मालूम कि ये जो 53 है, क्योंकि ये नंबर तो चेंज होगा, राइट? जैसे जैसे हम HU यस बनाएंगे, यस. तो सिस्टम को क्या मालूम कि इसका बॉक्स है, इसका पैलेट है, P1 है, P2 है, व्हाटएवर. कैसे समझ में आएगा? सो बिकॉज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल तो सेम ही होगा, राइट? यस यस यस. So if you go to the CWM Mat1, for example, see HU type. ओके, यहाँ पे वो चेक करेगा. अगर मुझे ये चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको? वही एडिट करना है वहां से फिर से. We are in edit mode only, यस. not able to do it. See, so ये MM02 से करना है. Okay, because if you remember, this यस is header data coming from ERP side. Okay, clear? यस सर. यस सर. Any question? This HU type? नो सर.
Okay, now I will give you one assignment. Now, so when you say कि for example ये box है, need to, okay, just a moment. Uh, sometimes it's very difficult to find a specific photo. Mm, yeah, okay. Okay, let's imagine that this area is HU manage area. Okay, और लेट्स ये पूरा बॉक्स और ये कंसिडर एज अ वन बॉक्स ओनली, राइट? जो जो तीन है जस्ट कंसिडर एज अ वन बॉक्स जो लेंथ है, राइट? सो वी हैव मेंटेन दैट ओके दिस HU वी नीड टू स्टोर HU टाइप व्हाटएवर, राइट? जो भी उसका टाइप होगा यही पे मेंटेन होगा, राइट? बट कैन वी डू द पुट अवे this entire HU here in this bin? No, sir. No, right? Because the dimension of this bin are different, Dimensions. Yes. right? So when we use strategy, right? So strategy may go to the strategy. Okay, bin determination. Okay, here you can see there is HU, right? Last time हमने bin determination देखा था, right? Bin type, sorry, right? कि हमने bin type के ऊपर भी हम कर सकते हैं, right? That it should go first to the, let's say 100 kg, then 200 kg, right? Like this. So we can also link that bin determination with HU. First of all ये तो हमने already assign किया है, right? For warehouse, right? Then we have also assigned a particular storage type जो हमने just अभी किया थोड़ी देर पहले, C, right? But when we say that in this HU10, right, we want to store PL and CB, our system will identify the correct bin, right? So हमें यहाँ पे for example 7500, so HU type HU10 and HU type is 75 PL, so it should go first, let's say in B001, for example, right? If not, if there is no any empty bin available, right, then it should go to the, let's say B002. bin type में हम क्या क्या maintain करते हैं? What are the master data we maintain in bin type? If you remember, if you go to the master data, storage bin type, so we maintain weight and then their length, width and height. Clear? Yes, sir. और ये हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं? स्टोरेज बीन में, राइट? मतलब जो हम स्ट्रैटेजी के वक्त सचिन क्या करता था, इफ यू रिमेम्बर, कि वो मटेरियल वाइज हमने इंडिकेटर क्या रखा है, फिर स्टोरेज टाइप में जाके उसका कैपेसिटी क्या है, अभी वो विल आल्सो चेक विद द HU टाइप आल्सो कि कौन सा HU टाइप कौन से बीन टाइप को अलाउड है.
तो वो ओके बीन भी चेक करेगा और एचयू भी चेक करेगा सर? एचयू से बीन चेक करेगा कि उसका सीक्वेंसिंग ओके क्या ओके मेंटेन किया है ओके ओके ओके। मतलब मतलब उसका साइज वेट सब एचयू के हिसाब से बीन चॉइस करेगा वो। या मतलब वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा राइट फॉर एग्जांपल वो देखेगा कि ठीक है मेरे पास एचयू टाइप है 75 पीएल वाला ओके तो इट शुड गो फर्स्ट इन B001 ओके B001 का कैपेसिटी XYZ मेंटेन है तो B001 हमने बीन में हमने मेंटेन किया है तो अगर उसको एम्प्टी बिन मिला तो ठीक है अदरवाइज इट विल गो फॉर B002 नाउ व्हाई नॉट एम्प्टी बिन जो भी स्ट्रैटेजी हमने मेंटेन की है एडिशन टू स्टॉक एम्प्टी बिन जो कुछ है क्लियर क्लियर सर। ये आपको टेस्ट करना है ओके स्मॉल असाइनमेंट एनी क्वेश्चन तो इसमें आपको स्ट्रैटेजी एचयू कॉन्फ़िग ये पूरा होना चाहिए तभी आप ये कर पाओगे एनी क्वेश्चन इन एंटायर एचयू कॉन्फ़िग और प्रोसेस हेलो तो या एनी नहीं क्वेश्चन सर, नो सर। एक बार पूरा रिवाइज करना पड़ेगा इशू फिर डाउट आएगा तो पूछेंगे yeah but HU is like very important so please make sure that क्या प्रैक्टिस आप आपने सब सिनेरियो टेस्ट किए जो भी हमने डिस्कस किए हैं क्योंकि अभी इन अपकमिंग सेशन सब एचयू के ऊपर ही होने वाला है ओके नेक्स्ट टॉपिक इज POSC no sorry packaging specification okay I'll just give you an overview of packaging specification so जो packaging specification है that we can use uh, in all process okay but we'll check uh, like the reason or like example in inbound only okay so packaging specification अभी इनबाउंड में कैसा है फॉर एग्जांपल नाउ जो हम पैक कर रहे हैं मैन्युअली राइट हम एवरी टाइम वी डू पैकिंग राइट VL31 में या अपने PRDI स्क्रीन में राइट बट वी कैनॉट डू दिस पैकिंग और दिस ट्रांजैक्शन or method right we can use this method on day to day activity right it's very time consuming what if अगर एक वेंडर है और उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि यस whenever we receive this X material is going to be packed 10 pieces in one box like this okay then it will be very difficult right और अगर उसने 1000 pieces सेंड किए then is next to impossible right हेलो तो वो तो हम एक एक वन बाय वन तो पैक नहीं कर सकते राइट
Hello. Yes, sir. Yes. So in that case, we can use the packaging specification. Okay, उससे हम पैकेजिंग मैन्युअली ट्रिगर कर सकते हैं, सॉरी ऑटोमेटिक EWM में ट्रिगर कर सकते हैं. बट एज आई सेड, पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन वी कैन आल्सो यूज इन आउटबाउंड. तो ऐसे कुछ उसमें उसके जो मास्टर डेटा है, राइट, वो ऐसा कुछ है जो इनबाउंड के लिए रिलेवेंट नहीं है, राइट. बट करंटली विल चेक दैट आल्सो, एंड आउटबाउंड में फिर लाइक विल चेक द यूजेस. फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट प्रिंटेबल है, तो ये इनबाउंड में तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज वो हमें खाली वो पैक करना है, राइट, लाइक दिस. ओके, नाउ उसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, सो इज लाइक दिस. ओके, हेडर, फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट और पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन कैसे ट्रिगर होना है वो हम मेंटेन करते हैं, राइट. बेसिकली पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन इज लाइक वेयर वी मेंटेन द पैकेजिंग मटेरियल और देयर स्टेप. ओके, मतलब लेट्स से अगर मुझे एक बॉटल पैक करनी है, राइट, तो फर्स्ट लेयर क्या होगी उसकी? बबल शीट, राइट. वर्क स्टेप क्या होगी? रैपिंग, फॉर एग्जांपल, राइट. फिर सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा? बॉक्स में पैक करूँगा और बॉक्स पैकिंग. और एट द एंड लेट्स से जो कुछ बॉक्स है, राइट, 10 बॉक्स, 8 बॉक्स, उसको पैलेट के ऊपर रखूंगा मैं. क्लियर? Clear, sir. फिर उसको जो बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. ओके, इन पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन विच कंसिस्ट पैकेजिंग मटेरियल एंड वर्क स्टेप. ओके, so we can also reuse the element, right. मीन्स ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉक्स को हमने बॉक्स में पैक किया है, राइट. So that is called, that's the reason we call this element as element group. So we can have more than one element or steps in simple language, right. Then in element group, so it's also possible that okay, here also we have more than one element group कि यहाँ पे ये second element group में ये. So that is called level. So in level 1 we'll do auxiliary packaging, level 2 box, level 3 pallet. Clear? Clear, sir. तो डिफरेंट सिनेरियो में रहेगा. नॉर्मली सर सप्लायर से जो मटेरियल आता है वो Yeah, that is एक an के साथ simple. आता है. नहीं, बॉक्स के साथ आता है, मतलब जो Mhm. इनबॉर्न होता है. मतलब क्या हम यहाँ पे आके फिर एचयू बनाते हैं फिर रखते हैं, कैसे रहता है नॉर्मली Now, रियल as I टाइम में? said, we can use in inbound case, we'll just set up and then it will trigger packaging automatically. ओके. That's our motto in inbound. मतलब अगर इन हाउस प्रोडक्ट तैयार हुआ तभी हम ये पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन अप्लाई होगा ना, अगर डिस्पैच करना है, बाहर भेजना है तो. Now, as I said, ये हम all process में use कर सकते हैं, inbound, outbound, internal, right? Like inbound में हम कब use करेंगे? जब हमें पैकेजिंग ट्रिगर करना है ऑटोमेटिकली. ओके, अगर लूज प्रोडक्ट आया उसको पैकेजिंग करके Yes. रखना है. ओके. No. So एग्जाम्पल ऐसा है कि नॉर्मली वेयरहाउस में तो कभी लूज प्रोडक्ट नहीं आएगा, राइट. लाइक 100%, लाइक यू कैन और वी कैन से 99% वो बॉक्स में ही भेजेंगे, लाइक दिस, राइट. अगर लेट्स से ये वाला पैलेट, मुझे मालूम है कि एक बॉक्स में लेट्स से 10 क्वांटिटी है, राइट. और क्वांटिटी का मेरे पास, टोटल क्वांटिटी का इनवॉइस है मेरे पास वेंडर से, राइट. तो मुझे वो एक एक पैक करना बैठेगा, राइट, डिलीवरी में. तो ये टाइम कंज्यूमिंग है. व्हाट इफ अगर मेरे पास 10 पैलेट है, वी कैन नॉट डू इट राइट मैन्युअली. इफ वीएल 31 में जाके फिर जो कुछ क्वांटिटी है वो हमने पैक की, राइट, 1 बाय 1, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, राइट, ऐसा तो कर नहीं सकते. सो वी कैन यूज पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन to trigger that activity or trigger the packaging automatically in EWM. मतलब हम ERP के साइड में जब डिलीवरी क्रिएट करेंगे, we'll create without HU, but once that delivery distributed to EWM, right, so system will check the configuration जो हम अभी करने वाले, right, master data and condition,
और अगर उसको जो डेटा चाहिए उसको मिल गया, देन इट विल ट्रिगर द पैकेजिंग ऑटोमेटिकली इन EWM. क्लियर? उसमें नीलेश इनकेस वेंडर का कंप्लायंस नहीं है और स्पेसिफिकेशन देने के बाद भी कुछ अप डाउन होता है, तो वो फिर EWM में Yeah, करेक्शन करना। means we do have an option. Yeah, we can do correction. अच्छा, Is manual correction? Yeah, that we can do. ओके। Okay, clear? Like basic scenario. And this is Yes, a sir. master data. We can print printable document. We can print this because now why we have to print? So there is something called VS, value added services. So in value added services also we need to use packaging specification. और उसमें हमें उनको बताना पड़ता है कि yes क्या कैसे पैक करना है या कैसे एक्टिविटी कंप्लीट करना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर कुछ करना है तो. So that the reason we have to print that document. But yeah, in our current scenario, we will not print that document. It's not required. Okay. Any question? Yeah, this we'll see tomorrow in more detail. Because it will require like half an hour, not half an hour, maybe more than that, 45 minutes, 1 hours. Maybe we'll discuss tomorrow. Okay. Just want to know one more thing कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजे अब तक, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी स्टार्ट कर देता हूँ. हेलो. एक कॉन्सेप्ट भेजा था ना आपको, इसके अलावा भी कुछ ओके, है? वो एक ही है क्या? ठीक है, चलेगा. मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर डॉक्यूमेंट. सो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हो गए जो अभी मतलब अपकमिंग प्रोसेस के है. सो या यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर दोस डॉक्यूमेंट. I know today's session is like a short session, not even 1 hour. Sorry for that. Actually मैं ऑलमोस्ट 3 बजे से कंटिन्यूस कॉल में हूँ. अभी भी जस्ट एक कॉल लाइक जस्ट बिफोर आवर सेशन 9 बजे तक था वो शेड्यूल, बट थोड़ा जल्दी खत्म हो गया 10 मिनट पहले. तो या ओके. Yes, sir. Okay, then stop for today. If you have any question during practice, let me know Okay. on our WhatsApp group. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Yeah, and please अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए ऑन डेली बेसिस, क्योंकि अगले वाले जो जो टॉपिक होने वाले इस बहुत इंटरेस्टिंग है. उसमें HU और स्ट्रैटेजी ये तो चीजें लगेगी. ओके. ठीक है. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, या बाय. थैंक यू. ओके, बाय बाय, थैंक्स।